हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech Simplified। दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग एंड लेवलिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 20 की, जिसमें हम फर्दर 10 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 191 टू 200। सो आई होप हमारी गुज़िश्ता वीडियो से आपने लर्निंग हासिल की होगी। आज की वीडियो को भी मुकम्मल एंड तक देखिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ इसको शेयर करें। ये वीडियो उन इंजीनियर्स के लिए हेल्पफुल होंगी जो कि अपने आप को गेट एग्जामिनेशन में, SSC JE एग्जाम, RRB एग्जाम और एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इफ यू आर हंटिंग फॉर द जॉब और आप अपने आप को किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए या जॉब टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस वीडियोस आर फॉर यू। इन वीडियोस को मुकम्मल एंड तक देखिए। हमारे चैनल के ऊपर प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड भी मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को भी देखकर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर आपके साथ ये MCQs शेयर करेंगे। सो मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्वेइंग फॉर SSC JE पार्ट 20 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 191 टू 200। क्वेश्चन नंबर 191 says that the spacing of cross section in a hilly country is usually option A 5 meter, option B 10 meter, option C is 15 meter and option D is 20 meter. Spacing of cross section in hilly country is usually 20 meter. D is the correct option for this question. 192. In indirect method of contouring, the best method of interpolation of contours is option A by graphical method, option B by estimation, option C by arithmetical calculation, and option D is all of these. So C is the correct option. Indirect method of contouring is done through arithmetical calculation. So C is the correct option for this question. 193. The method of surveying in which field work and plotting work are done simultaneously is called option A compass surveying, option B is leveling, option C is plane tabling, option D is chain surveying. So plane tabling में आप plotting भी साथ साथ करते हैं और field measurement और field work भी उसी वक्त ही करते हैं. So both activities are done simultaneously. Therefore C is the correct option, which is plane tabling. 194. In plane tabling, the instrument used to measure the horizontal and vertical distance directly is known as option A plane alidade, option B telescope alidade, option C tachometer, and option D is collineometer. So B is the correct option. It's telescopic alidade, which is used directly for plane tabling. 195. The plane tabling surveying is option A most suitable for preparing small scale maps, option B particularly advantageous in magnetic area, option C less costly than theodolite survey, option D all of these. So all these are the correct option. Plane tabling में small area के ऊपर आप सर्वेइंग कंडक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शंस वगैरह हो, वहां पे पर्टिकुलरली ये एडवांटेजियस है, और थेडोलाइट वगैरह कॉस्टली सर्वेइंग कॉस्ट से भी आप बच सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन. 196. The plane tabling surveying field work is recorded in a field book to be plotted afterward. Option A is agree and option B is disagree. So it is disagree because यहाँ पे कोई फील्ड बुक नहीं होती, बल्कि आपके चार्ट के ऊपर ही आप फील्ड मेजरमेंट लेके वहीं पे आप प्लॉटिंग करते हैं. So 197. The operation of turning the table so that all the lines on the paper are parallel to the corresponding lines on ground is called option A leveling, option B centering, option C setting, and option D is orientation. So it's orientation. जब आप टेबल को मूव करते हैं so that your lines are parallel to the corresponding line on ground, so it's called the orientation of the table. 198. The plotting of small area which can be commanded from a single station is usually done on the plane table by the method of option A is radiation, option B intersection, option C traversing, option D resection. So A is the correct option. It's radiation. Small scale के लिए radiation method आप use करते हैं. 199. The method of intersection in plane tabling is commonly used for option A locating the distant and inaccessible points, option B locating the broken boundaries, option C locating the points which may be used subsequently as the instrument station, and option D all of the above. So all of the
above is the correct option. The method of intersection in plane tabling is commonly used for all these. So D is the correct option. 200. Method of plane tabling commonly used for establishing the instrument station only is option A, method of radiation, option B, method of intersection, option C, method of traversing, and option D, method of resection. So it's the method of resection in which we use in the plane tabling commonly for establishing the instrument station. So D here is the correct option for this question. So friends, this was part 20 of our ongoing video series on surveying and leveling मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमने टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपने इससे अपनी लर्निंग इनहेंस की होगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। सो लेट्स मीट अगेन विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।